1.5 hour time. So to make these sessions very effective, I invite the following guest here. Dr. Abhishek Ghosh, please come to the stage and occupy your seat. So Dr. Jalandhar Ambedkar, yes, sir. Please come, sir. So let's welcome them with a clap. Our beloved sister Rajyoga B.K. Saroj Didi, Brother Sri R.K. Jain, and our sister Rajyoga B.K. Nilima Bain. Kindly occupy the dais. So, let me request our sisters to welcome our guest with the flower and badge. Still, I request those who are at the back to come in the front. That will make the appearance better. थोड़ा पीछे वाले आके आएंगे तो अच्छा रहेगा. आगे बहुत सीट है एक्चुअली, प्लीज आगे आकर इसको ऑक्यूपाई करना प्लीज. Let's have 1 minute silence and then we'll start. भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं. जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है.
Om Shanti. So, let me first introduce the panelists to all of you. So, we have Sri Abhishek Ghosh, who is having the education, leadership, and cultural advisor and scholar of Hindu philosophies of Dharmic traditions. He is a doctorate from Chicago, MSc from Oxford, and Dean at Somaya Institute of Dharma Studies and Somaya Vidyalaya University, Mumbai. And he is also academic director, Institute of Vaishnava Studies, senior editor, and Journal of Vaishnava Studies, expert in the Hindu philosophies as well as of the devotional movements, Sanskrits, ethics, and leadership. He is also a mentor, educator, and polyglot, bridging cultures and ideas, and an advisor on cultural and social initiatives in India and USA. Welcoming Sri Abhishek Ghosh. And our second panelist, Dr. Jalinder Ambedkar, who is the Center of Materials for Electronics Technology, that is CMET, Government of India. He is a researcher in quantum dots, nanotechnology, and green chemistry. He is formerly with CSIR and 55 plus international papers, 15 patents, and top 5% ResearchGate scholars. So he has an expertise in the energy storage, water quality, waste management, etc. He is the executive committee member, member of NEED mission, and Vinayan Bharati, reviewer for international journals. Also, he is a reviewer for the international journals. And additionally, he is a certified yoga teacher and a scientific speaker on health, climate change, and sustainability. Welcome you, sir. So while I introduce, I request Didi has joined. So please invite Didi with bouquet and badges. BK Saroja Didi is the director of Rajyoga Centers, Vasant Kund, Dwaraka, New Delhi, a regional coordinator for the SpARC wing for the Delhi NCR regions. And as she is practicing Rajyoga since 1968, serving humanity with dedication for over 42 years. And she is the regional coordinator of the SpARC wing for the Delhi NCR region and a former associate coordinator for medical and media wings. And she is recognized with the Excellent Service Award by the Indian Medical Association, Delhi branch. And in her service, she has inspired more than thousands through conferences, workshops, training in India and abroad on leadership, stress-free living, holistic health, and meditation. So, welcome, Didi. And the fourth panelist is Sri R.K. Jain, who is this retired scientist head from DRDO, laser science and technology expert, and he is a recipient of DRDO Scientist of the Year Award. He is his distinguished career at DRDO, senior scientist at LASTEC, and is published numerous research papers in science and technology, contributed to the advancement of the high energy laser systems for defense applications, and also he mentored many young scientists and engineers fostering innovation in strategic technologies. Welcome you, sir. So let us give a big applause to the panel. So it's a very wonderful panel which is multiple personalities, and today's topic also very interesting topic: consciousness, ethics, and culture. How they have connections and where there is some conflicts. To set the tone and set the phase for the discussions, let me give a first level introduction about this topic, and then our panelists will come with their own views with respect to some questions what we are going to discuss on that. So ideally, the consciousness is the state of mind which can influence our thought process.
Basically, we classify the consciousness into major two categories, a non-physical or a metaphysical level and physical level, which we use the terminology in our institutions as soul conscious and body conscious. So that is one important thing to understand about the consciousness. And the second is that we talk about ethics, which are the behavior with belief of which are right or wrong or acceptable or non-acceptable actually, which is we define actually, right? And culture is the legacy approach we maintain in the social relationships, which is embedded into our behavior so that it can promote and create a value-based society. And as we all know, Bharat culture is very well appreciated one actually. And today our state of affairs also we know how it is there. So all these three, if you see it, they have very strong connections. And one which is majorly influencing other two is the consciousness, which influence the ethics as well as the culture. Now we'll see how do we go about with this, what kind of consciousness we should have it, or what is the choice we should have it actually, how this ethics can be uplifted, how the culture can be re-invoked or brought into the systems, etc. actually. So to start with, let me put the question to our Abhishek. Sir, in today's world, we are hearing about establishing or bringing back Bharat culture actually. So can you throw some lights on it, how it is possible? No, for almost 200 years, the British rule in India changed our educational systems. And it taught us to believe that whatever is coming from the West is good, advanced, and whatever comes from Bharat is backward and in need of reform. So that's why a lot of our children, both in India, I live in the US and America, they think science came from the West. But the fact remains that Bharat had her own science. Of course, it did not get the kind of research and development and funding and support that a lot of Western sciences got because of multiple invasions that took place over centuries. But the fact remains that in Bharat, we did have scientific temper, we did make tremendous advancements, and in our generation, we have quite forgotten it. And therefore, there is a need to make our present generations aware of what we are calling Indian knowledge systems. Mind you, it's not a knowledge system, it's systems. And Indian knowledge systems are constantly developing. And for us to have the confidence as a people, as a nation, it is important to be connected with our roots, know where we are coming from, take count of what progress we have made, and take note of the areas where we can grow in the future. Thank you. Very, very nicely summarized actually, and how the Indian knowledge systems, which is going to bring a revolution or a change into the cultural things to bring it back actually. Good. So let me put something on the ethics side. So this is to Dr. Ambedkar. Sir, what is your view in uplifting and maintaining the ethics in all our affairs? It could be a workplace, it could be home, or wherever we are actually. How are you going to uplift or maintain our ethics? What's your views on this actually? Interesting, quite interesting issues to interconnect consciousness to culture.
Very first thing, before proceeding to the question, let me have thanks to my Sunita Didi from Pune, who have given me this idea regarding this conference. And when I entered this beautiful campus, I have a kind of a rebirth. The atmosphere over here, the culture, and the consciousness. Now I'll switch to the question. So in our normal ecosystem, there is three kind of a health I want to notice. First is mind health, manasik health, kayik health, samajik. So three things are there. So if we correlate these three things and see to the topic, then we'll find these interconnections and how to establish the culture to overcome such kind of issues arising through the conflicts due to this. So consciousness, how to have this thing, actually ethical values, moral values, how we can inculcate. So over here, first health, mind health, manasik arogya. So for this purpose, actually one need to focus himself. How it can be focused. So for that, little bit we'll go through the science that we have Agya Chakra. And in brain, there is a pineal gland. So these things are getting connected, and once you could focus in yourself with these concern issues, you can have consciousness. So currently, most of we used to brain less than 3%. If you could focus, if you have a treasure, we could unlock our treasure, that subconscious mind, by conscious thinking, conscious focusing, then we could increase uses our mind power above the 3% level. And yes, we could have a solution. For that purpose, we need to have meditation, different techniques are there. So purpose is that. So individuals, powerhouse need to be disclosed, opened. Good, sir. Good, very good. So you are trying to say that the mind health, some focus and invoking the subconscious levels or the power to the mind can be one of the things where you can lift or build the values through our proper thought process actually. So taking you to that forward, Sri Jain, this is for you. In your approach, what is the state of mind if you could maintain which can lead to make us more productive, could be in research or could be in any of our activities, how it can lead to that actually? Okay. हेलो जब हम किसी एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव प्रोसेस यूज़ करके कोई क्रिएटिव नॉलेज इन्वेंट करते हैं और वो नॉलेज हमारे प्रोडक्ट में यूज़ होती है जिसका सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम एक प्रोडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। और जैसा कि इस डेफिनेशन से क्लियर है, हम मेरे हिसाब से मैं भी एक प्रोजेक्ट मैन रहा हूँ, 4 स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। पहली स्टेट ऑफ माइंड है पीसफुल एंड हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि इससे हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है और जब हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है तो हम बेटर रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा है ह्यूमिलिटी, जनरली इसको हम इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी भी कहते हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानने लगते हैं, कभी कभी वो रिव्यू भी नहीं कराते किसी से, लेकिन हमेशा एक स्कोप होता है इसको इम्प्रूव करने का, तो उसको दूसरे का ओपिनियन भी हमें टेक केयर करना चाहिए। सेकंड, उसकी क्यूरियोसिटी, रिसर्चर को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में जिसमें वो रिसर्च करने जा रहा है,
और उसको नॉलेज गेन करने के लिए बड़ा क्यूरियस रहना चाहिए। और फोर्थ थिंग, रेजिलियंस। रिसर्च एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है, इसमें आपको रिजल्ट बहुत देर में मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते, बार बार आइटरेशन होता है, तो इसमें बहुत पेशेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक प्रोडक्टिव रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, nice. So you are also trying to say that it's very important to have this self-interest, curiosity, and resilience in order to move forward to bring the productivity in the research. So all this says that there is somewhere some influence of our state of mind or the consciousness plays a major role in achieving the results what we want to go for it. So इसके लिए हम सरोजा दीदी से पूछेंगे, दीदी, डज कॉन्शियसनेस प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ? इफ सो, what is the right kind of consciousness and how do we choose that one actually? Om Shanti. Consciousness actually is the seed. Ethics are the fragrance. And culture is the garden. ज़रूरी बात है कि अगर बीज क्वालिटी वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग फल भी अच्छा आएगा और ब्यूटीफुल गार्डन तैयार होगा, जिसको हम नई सृष्टि कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। लेकिन जैसे आपने टॉपिक का खुलासा दिया कि एक है हमारा कॉन्शियसनेस जिसमें हम लोग फिज़िकल लेवल एंड मेटाफिज़िकल, जिसको हम कहते हैं आउटर सेल्फ एंड इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ से रिलेटेड तो जो आपको इन आँखों से नज़र आ रहा है, हमारा जो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं आउटर सेल्फ से, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना डिजिग्नेशन, नेशनैलिटी, कास्ट, की क्रीड, कलर, रिलीजन, इसका जब हमें कॉन्शियसनेस आता है तो हमारा कर्म व्यवहार बदल जाता है। और जब हमारा मेटाफिज़िकल यानी कि सोल कॉन्शियस, जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस लेवल, ज़रूरी बात है, पॉजिटिव एंड प्योर होगा। तो बॉडी कॉन्शियसनेस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल evils like lust, anger, greed, attachment, ego, hatred, animosity, revengeful feeling, dominating, insulting, abusing and so on. तो जितनी भी हमारे अंदर आज कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस फिजिकल बॉडी, अब अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? तो जो हमारी ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, खुशी, शक्ति, इसका संचार हमारे जीवन में होने लगता है। तो मैं आपको एक सेंटेंस में कहना चाहूँगी कि कॉन्शियसनेस से, हिंदी में हम कहते हैं जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति, जैसी कृति वैसी आकृति, और जैसी आकृति वैसा संसार। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस, एटीट्यूड, विजन, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, ये इतना रोल प्ले करती है संसार को बनाने में। तो इसलिए हम सभी सोल कॉन्शियसनेस की गहराई में जाएं और उसको अपने जीवन में कांस्टेंट लेकर चलें।
तो बहुत सुंदर संस्कृति का हमारा निर्माण हो सकता है। शांति। Very beautifully told. So, very beautiful actually. So this means we now trying to see the significance of choosing the right consciousness, right? We all know, we all have the consciousness, but what type of consciousness we are carrying it to do our perform our day-to-day things or bring values in our systems. So I would like to ask Dr. Abhishek, so do you think that right consciousness can instill some moral values and it can uplift our ethics? It's very important. So, I believe that there are two kinds of ethics. One is outside in, which means I am behaving nicely only because people are judging me, and if I don't do it, then there will be bad consequences. That is ethics out of fear, and that is not sustainable. But if we engage in spiritual practices that uplift our consciousness, then we will be ethical with or without anybody watching us or judging us. And that is inside-out ethics. It is better to have inside-out ethics because then it is our nature to be ethical. And therefore, a consciousness that is uplifted naturally will not be able to do anything that is unethical. When we have a sense of belongingness, we know that we are not this body, we are the spirit soul. And our body is like a spacesuit. And think about it. In this world, on this planet, the surface of this earth is 70% water and 30% solid material. And that is the exact same ratio in our body, 70% water, 30% solid material. Is that a coincidence? It cannot be. So this means that a spark of consciousness has taken up materials that are available on this planet to express itself. When we come to that level of consciousness, then it is impossible to be unethical. When we are seeing things from the level of the Atma, then it is impossible to hurt another being, do something wrong. Thank you. Really gone very deep into the point, and you already touched what is supposed to be touched. So it says that that means we should more and more get into inside and more become what type of consciousness? Metaphysical or soul consciousness actually. So where you are unknowingly also will not become unethical actually. You will become naturally more ethical, and ethics is naturally built in you actually. Wonderful. So, sister, it makes me to talk about little more with you. If you say, if brother says that this is going to make us very ethical and it will bring us the cultural values also into us, can you throw some light on how this consciousness can influence and restore our culture back? एक्चुअली नैतिकता का जो आधार है वो आध्यात्मिकता है। बिना आध्यात्मिकता के कितना भी हम नीति वचन एक दूसरे के साथ कहते रहें, वो जैसे इन्होंने बताया बहुत अच्छी बात,
वो केवल बाह्य स्तर पे होगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझे हैं कि हमारा मूल क्या है, तो अध्यात्म हमें बताता है हमारा मूल क्या है, द स्पिरिट विद इन। तो इसकी हमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा जैसे भारत का पुरातन कल्चर था कि बच्चे सवेरे उठ कर के जो नियम पालन करते थे वो हमारे भारतीय कल्चर में था, सिस्टम में था, सवेरे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। उसके बाद उठ कर के अपने सीनियर्स या एल्डर्स के सामने bow their heads in front of them, और फिर परमात्मा को याद करके उनको कहा जाता था कि आप किचन में आएँ, अब बिना स्नान किए प्रसाद चढ़ाए आप भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये कल्चर किसी समय में था, लेकिन धीरे धीरे अब चला गया है, जैसे वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट आने से। आज तो पॉप म्यूज़िक बजेगा तब बच्चे उठते हैं और लेट उठते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वापस अपने कल्चर को ले आएं, तो उसके लिए हमें इनको बच्चों को जो है संग देना पड़ेगा। अब जितना हमारा श्रेष्ठ संग होगा, जैसे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बात चली थी साइकिल की, कि कॉन्शियसनेस से एटीट्यूड, फिर उससे विजन, फिर उससे बिहेवियर। लेकिन कॉन्शियसनेस भी कैसे बनती है? वो बनती है जो इन्फॉर्मेशन से। जैसी इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी में फीड कर दी जाती है, वो आपके कॉन्शियसनेस लेवल तक चली जाती है। अब इन्फॉर्मेशन हम कैसी ले रहे हैं? एज इज़ द इनपुट सो इज़ द आउटपुट। जैसा इनपुट होगा वैसा आउटकम होगा। अभी हमारा जो चारों तरफ से, चाहे मीडिया से देखें या कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में, कहीं भी चले जाएं, तो इन्फॉर्मेशन हमें एक, ठीक है लिटरेसी तो है, लेकिन सही एजुकेशन नहीं है। विवेकानंद ने बताया कि एजुकेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज़ ऑलरेडी विद इन द मैन। तो वो जो हमें सीखना है, उसके लिए हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लें। तो सार रूप में मैं एग्जाम्पल तो इसलिए नहीं देती तो सरल हो जाता, क्योंकि समय की सीमा है। जैसे जो हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन फीड की जाएगी, जैसे ब्रह्मा कुमारीज के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लोगों को थी कि भाई इनके पास नहीं जाना है, कुछ मिथ्स थे, तो लोग नज़दीक आना नहीं चाहते थे। तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी, तो मेरे को याद है कि एक हमारी बहन वीआईपी को बुलाने के लिए गई, तो उन्होंने बाहर से तो उन्हें सत्कार दिया, कहा ठीक है दीदी हम आपके हेडक्वार्टर में ज़रूर आएंगे। जाने के बाद अपने पीए से कह दिया कि आप दोबारा मुझे इनका फ़ोन आए तो नहीं देना, मैं एंटरटेन नहीं करना चाहता। कहा क्यों? कहा हमारे घर में हम नहीं चाहते कोई वाद विवाद हो, इसलिए हमने इनके बारे में ये सुना है। ये दिस वाज जस्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ कि सिस्टर फ़ोन करती रही, वो एंटरटेन नहीं करते थे। एक बार उनका ही अपना एक ख़ास मित्र जो बाल्यकाल से आपस में इकट्ठे रहे थे, तो उनके पास आए और वो मिल कर के बहुत खुश हुए उनको। और उनकी आदतें वो जानते थे क्या थे शुरू में ये, तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया सब कुछ। ऑफ़र करने के बाद ये कहा कि उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कुछ आप ड्रिंक लेंगे या आप भोजन लेंगे? बोला हम कुछ नहीं लेते, हम ब्रह्मा कुमारीज के यहाँ जाते हैं और हम मेडिटेशन सीखते हैं। बोला आपकी लाइफ में तो बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, आप मेडिटेशन सीखते हैं और ब्रह्मा कुमारीज के पास जाते हैं। अरे वो तो हमारे पास भी आई थी सिस्टर, वो तो सचमुच देवी सी लगती थी, पर मैंने उनकी बातों पे गौर नहीं किया। तो एकदम से अपने पीए को बोला कि आप निकालें ज़रा उनका कार्ड और उन्हें फ़ोन मिलाएं, और कहा कि फ़ोन मिला के कहा कि दीदी मैं किसी कारणवश एंगेज हो गया था, मैं नहीं आ सका, पर अब जब भी आपका कार्यक्रम हो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर चलूँगा। अब आप देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव मिली और सब कुछ चेंज हो गया, है ना। ऐसे ही चेंज हुआ, वो दृष्टि बदली, वृत्ति बदली, कृति बदली, बिहेवियर बदला, सब कुछ चेंज हुआ। ठीक वैसे ही जब हम ये पॉजिटिव
इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान की बातें हैं, रेगुलर मेमोरी में फीड करते हैं, तो हमारा ओवरऑल सब चेंज हो जाता है। तो इसलिए जैसा संग वैसा रंग। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सोचो, लेकिन अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, तो आपका हायर लेवल का कॉन्शियसनेस हो जाएगा और आपका इसके से संसार और संस्कृति बदलेगी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड एक्चुअली। सो इससे क्या हम सीखते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, उसमें बहुत अटेंशन देना है एक्चुअली। सो व्हाट यू आर गोइंग टू कंज्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे lot of contents are there, so we should know that what we should consume and what we should not consume. Acha, so sister also said about that meditation can influence the consciousness actually. So I just want Sister Nilima to throw some light on that, who has came here to make us get into meditation actually. Om Shanti. I think since morning, lot of times we all have done meditation. जितना करे उतना कमी है, no doubt. मैं सोच रही थी कि जो बातें हमने अभी सुनी, बहुत सुंदर बातें सुनी सभी से, क्यों ना हम इसका एक्सपेरिमेंट करें. We can match this with our own lifeline. हम थोड़ा पीछे जाएंगे पास्ट में और देखेंगे हमारे लाइफ में इन बातों का क्या अहमियत रही है, क्या इन्होंने चेंजेस लाए हैं या ला सकती है. सिंस वी डू इट फॉर आवरसेल्व्स, इट विल बी परमानेंट. जो चीज़ मैं खुद करती हूँ मेरे लिए परमानेंट हो जाती है. मैंने शक्कर खाई है एंड आई एम वेरी श्योर इट इज़ स्वीट, तो कोई मेरे बिलीव सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएगा. सो वी विल सी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है. आई सजेस्ट इफ़ यू वांट यू कैन क्लोज योर आइज, क्योंकि हमें अपनी पुरानी लाइफ भी देखनी है. ऐसे तो कहते हैं भूतकाल में नहीं जाना, लेकिन इसलिए जा रहे हैं ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर की वैल्यू पता चलेगी. सो सिट बैक एंड गो बैक इन योर पास्ट. वो समय था जब हमारा कॉन्शियसनेस कुछ और था. मैं अपने आप को शरीर मानती थी, पता नहीं था आत्मा का. एंड नाउ थिंक इन दैट बॉडी कॉन्शियसनेस what was on the periphery. Everything connected to this physical body. My name, my age, my gender, my religion, my education and my position. सब कुछ इस नश्वर देह से संबंधित. मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान, मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे. That was the periphery of that consciousness. And the result. Yes, उस समय भी एथिक्स थे मेरे लाइफ में. आई न्यू व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. हम जानते थे झूठ बोलना गलत है, रिश्वत देना लेना गलत है, बिना पूछे चीज़ उठाना गलत है. वी न्यू. लेकिन because of that consciousness of the body, to a certain extent there was a manipulation of our ethics. I was compromising very often without even realizing. बच्चों को भी कई बार यही सिखाया. छोटी छोटी रिश्वतें दी, छोटे छोटे झूठ बोले.
बच्चे सीख गए. This is what was happening generation after generation. And now I am here with a right consciousness, the consciousness of my real self, the soul, something that is permanent, eternal and immortal. And now see what is on the periphery. जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए केवल मेरे अपने निजी गुण है. सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति. The original virtues of the soul. They are the only things on the periphery of the soul. अब ये मेरा consciousness मुझे बता रहा है how to be strong enough not to manipulate, not to compromise on my ethics. मेरे अपने गुण जब मेरे व्यक्तित्व के ऊपरी सतह पर है, वो यूज करना बहुत सहज हो जाता है. I don't have to dig them out. They are there, handy. मेरे अंदर वो है, सुख शांति है, असीम प्रेम है, शक्तियाँ है, प्योरिटी है, सब कुछ है. And with the help of these values, my personality becomes absolutely ethical. कहीं पर कोई प्रकार का समझौता नहीं. I am strong enough, courageous, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ. और यही एथिक्स जब सभी के अंदर आएंगे, that becomes a culture, the culture of the society. जब एथिक्स के साथ समझौता किया, याद करें कैसा लगा, कितना पेन था, कितना गिल्ट था, हेल्पलेस फील किया था. No more. That is not our culture. फिर से चलेंगे पुराने दिनों में जब हमारा कल्चर था हर एक के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम, त्याग को भाग्य समझना, अतिथि को देव समझना. अब जब मैं उस कॉन्शियसनेस में आ गई, as a ripple effect, the society will have the same consciousness. Everybody will have real ethical values. And then the culture of Bharat, प्राचीन भारत की संस्कृति, वही आपस में प्रेम, सम्मान, आदर, वही अतिथि मेरे लिए देव, वही त्याग मेरा भाग्य बनाता है. ये भावना
आज अभी से कम से कम हम सभी अपने आप से प्रण करेंगे. We all change our consciousness, the core of the life. When the core changes, everything changes. आज से और अभी से मैं स्वयं को और अन्य सभी को उसी शुद्ध, पवित्र, प्रकाशमान आत्मा के रूप में देखूंगी, महसूस करूंगी. I'll keep my original qualities on the surface. We all will keep on using them, sharing them, so that they increase. And soon we will see our ancient culture, culture of love, culture of happiness, joy, eternal joy. And for each person in this society, the life will be a celebration every moment. Feel it. Experience it. Om Shanti. Thank you, sister. So this is she's trying to take us what we discussed into how do you feel it to bring that realistic realization within you when you approach this way to do the meditations actually. How a meditation can influence our consciousness to show that only in between we brought this practice to make you to understand that what we discuss versus what we practice, how you can correlate actually. So, continuing with the things with a few more aspects, basically this shows that we have to promote these approaches more and more. So, I would like to ask Dr. Abhishek, what could be the future study you will promote to open the new avenues in creating a society with high morals, ethics, and that are absorbed naturally in our day-to-day livings actually? We all want to live in a world where we feel peaceful, happy, and experience stability. And therefore it is very critical to understand that we must treat others the way we want to be treated. Now, let us be realistic. Right now, of course, this campus is so peaceful, but the world is on fire. There are wars going on. We have experienced major disruptions in supply chains during the pandemic. Artificial intelligence, which is a great technology, is threatening people's livelihoods. So we are not in a perfect world. However, if we act from a place of despair, negative emotions, and hopelessness, then we have lost half the battle.
But if we live in this world from a place of wisdom, patience, and hope, no matter how difficult the situation is, we will become resilient. One of the most important spaces in the campus or the ecosystem of campuses is Pandav Bhavan. And if you look at the Pandavas, they went through the most difficult adversities one can imagine, constantly under threat of life from their own family. But if you look at their lives, no matter what, the beauty of the Pandavas is they stuck together. And at the end of the day, they had hope because they would not give up on each other. Can I share something funny? Yeah, short. Short. I sometimes jokingly ask my friends who are like my brothers, or brothers who are like my friends, that if I gambled you away, would you still be friends with me? Would you be my brother? No. But Yudhishthir Maharaj had to do that, to keep peace, to avoid war. And despite that, all the brothers stuck together. So that is inside-out ethics. That is a culture of positivity and hope. And so going into the future, if we have a world where at least we ourselves, and charity begins at home with ourselves, if we ourselves are able to live up to our ideals and know that if we don't have an ideal worth living for, it's not really worth living, then we are progressing towards making a more sustainable, beautiful planet. And we will leave this place in a better shape than we found it. Thank you. Very good. So, this is to Jalendra Ambedkar. This question is, so do you see then there is a good scope of spiritual intervention in this present work culture so that it can enhance the good connectivity or harmony in the system and minimize the conflicts? When we are in such a beautiful campus, we'll take away some of the good thoughts and the processes and the experiences and the soulful blessings. But when we return in our vivo life, that is the practical life, then the situations, ecosystems are different. Over here, there is the difference between this thing. Actually, वहाँ पे दरिया है. Difference between expectations and fulfillments. अपेक्षाएं और उपलब्धियां, उसकी जो दरिया है, these are the reasons conflict starts. For this purpose, we need to understand each one is associated with some real potential. उनकी एक क्षमता है, काबिलियत है. And that has to be considered in again 3 different systems. That's family, office or education system, and the social strata. But for this purpose, to avoid the conflicts, one need to have a spirituality base, understanding first, and understanding, as previous speakers, previous sessions, we understand, yes, I am unique, and similarly, the person next is also unique. And the base, that is the spirituality. Thank you. Very good. So, if this is the case, this is to Mr. Jain.
how do you promote the right consciousness and thereby embed the moral values into the research for our human existence? This is for you, Mr. Can you please repeat the question? Yeah. So how do we promote the right consciousness and thereby moral values embedded research for human existence actually? Right values in research for human existence is not only needed, it is very much necessary to ensure fairness, integrity and trustworthiness. Sometimes what happens, because of pressure or because of some short-term gain, we start following malpractices. Like, for example, some fabrication of research and plagiarism. You must have heard of it. So, and if the research is being done for human well-being or human existence, then the result can be devastating. So therefore, we must ensure right consciousness in the research. How do we do that? For example, first of all, as I said earlier also, we should be humble, humility is one, and then the research, the results per se should not be too much given importance, but the effort should be appreciated. And then there should be openness. There should be support to researchers. And time to time, some guidance should be given, and some ethical courses, if possible, should be included in the research curriculum. Very good. So you are also promoting to go for some ethical courses in the curriculum actually. So with this background, I would like to open the forum to the audience, and if you have any questions to the panelists, now it is your time to ask one few questions, not much thing, but we are opening the forum actually. Anybody has any questions? Who want to respond that? Can you repeat his question? Can you just repeat the question? They want to know that. Yes, we have worked in different parts of this group. And in India, many are meditating, and it's a part of our lifestyle. I won't say that more than 30 crore people are meditating, but in them, through that, how can we address that problem? Okay. Means how do we solve certain conflicts, what is happening in the world, through this practice of our oneness in the consciousness actually. That's what he's trying to ask actually. So Didi would like to respond for that. समस्या कितनी भी बड़ी हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, जब हम अपने मन को मेडिटेशन के माध्यम से गहन शांति की तरफ ले जाते हैं और सुप्रीम कॉन्शियसनेस गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, उस समय हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कई बार हमने ऐसा भी कहा कि अब आप गाइड करें परमात्मा से कि मुझे क्या करना है, तो आपकी इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको उस समय जो इंस्पिरेशंस मिलते हैं लगता है कि बात तो कोई बड़ी है ही नहीं, हम इसको बड़ा समझ के चल रहे थे, और जो हमें इंस्पिरेशन मिली हम बाहर आके उसे कर लेते हैं तो हमें 100% सफलता मिलती है। तो मेडिटेशन के बहुत ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस हैं,
मेरे ख्याल में चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में मन को साइलेंस में ले जाना ज़रूरी है। और जैसे इन्होंने डॉक्टर घोष ने भी कहा कि जब आप इस तरीके की साइलेंस में जाते हैं तो आपकी रेजिलियंस पावर, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब आपकी रेजिलियंस पावर बढ़ जाएगी तो हो सकता है कोई समस्या आ भी जाए पर आपको अनुभव नहीं होगी, ऐसे होगा जैसे मक्खन से बाल। So like the collective consciousness can bring an energy which can try to bring some solution to the ongoing issues actually. Yeah. Yes, sir. Okay, I understand the question is how do you make an individual person accountable in the background of spirituality or the awareness about the ethics and moral values and the cultural values actually. Accountability comes when one knows that at the end of the day, we are very small, insignificant, and we are dependent on a higher power. When we think that we are so powerful that we can do anything, then there is no need for accountability. But that is a misunderstanding of our situation. I will add this to the previous question our sir asked. Wars happen because somebody thinks that they are so powerful that they will win no matter what. Wars happen when there is a lack of sense of accountability. When a soldier's life is insignificant so that it can be sacrificed for the sake of one's most likely egoistic drive. But when one is situated at the level of the soul, Atmastita, first of all, one has to be accountable to oneself. Who we are really is known behind closed doors. If accountability does not come from the level of one's conscience, then, as I said, it is an outside-in approach. And that is not sustainable. If somebody, you are accountable because somebody is watching and somebody will punish you, that accountability, then you will try to see how can I escape, how can I cheat, how can I... But when that accountability comes from one's integrity, then it is genuine. And that can only be inspired by nurturing love and hope. If one does not receive love and hope, then you will think how to cheat this person. But when there is love, when there is hope, then you will be accountable just because there is love. Was I able to answer your question, sir? Thank you. Okay. So one last question actually. Okay, the question is how consciousness is developed in the human being and how it is sustained actually. How it is sustained.
So to make your answer more precise, I was also about to bring that type of thing only in the next level actually, where we are now agreeing that out of the consciousness of the two types, metaphysical consciousness or soul consciousness is the prominent one, where we are all have to strive to achieve it actually, right? We have to put all effort to become more and more soul conscious actually. Now along with soul consciousness, to enhance it, it's very important to connect with the supreme conscious also actually, right? You might have heard about the supreme soul and connectivity of the soul with the supreme. So how it is very important, once you attain your soul levels, how do you get into supreme consciousness and how it enhances and sustain our consciousness, what we are trying to achieve it actually. So about which I would like our Didi to throw the final thing as an overall concluding things, and with that we'll end up the sessions actually. Acha, you have some more questions? For achieving that consciousness, Yeah. self-realization is very important. Of course, How of one, course. really knows about oneself. Yes. If one doesn't know, then he is all the time bewildered in the world and he is lost. Therefore, it is very important, what is yourself? Who are you? And how you can integrate yourself with the major universe or universal self, or that is God. There are some of the psychologists, like Jung, he said that there is a single sense of self, and all the time there is a conflict of the self, that how to achieve that self from the dark world and the lighter world. Lighter part of the humanity, happiest part of the humanity, and the dark side of the life. Yeah, agreed, And- agreed, yes, madam. yes. Yes. And So, one can achieve that only when there is an integrated self. If he finds that there is a conflict between darker and lighter side, and that conflict is being resolved by that person. There are some of the behavioral aspects that how one person can achieve his sense of self or self-realization, that if a person perceives reality, whatever is the reality, very accurately, not in a biased way. If a person is open-minded all the time, he will not be able to blame others for something which is not done by that person. At the same time, if a person has all the time very freshness in his mind, he is perceiving the world as his family, that as he is the part of this universe. That is called the extension of the self, that how self can be extended to others. Yes. And on the basis of all these, there will be a kind of openness, happiness, democratic attitude, and love for others. And these can be achieved by a person who is mentally healthy, who is actualizing his own resources, in the sense that if he has capability, he is using that in a positive way. At the same time, he is doing something for others also. Only limited self, only confined to one's own personal motives, a person is not mentally healthy. If he does something for others, therefore, Sarva Dharma is very important, that you also protect other persons, not only yourself. Thank you. thank you. Thank you. So, coming back to the point with what she's also adding it, not only self, but it has to be extended actually. So, we need to know that how do we sustain this soul consciousness and how it can be empowered by connecting with the supreme consciousness, and in day-to-day life, if that is there, then we can easily maintain the ethics as well as bring more culture and values into our day-to-day life actually.
So with that conclusion, I want Didi to put few words about what is the kind of best practices which can make it to happen in the day-to-day life, and with that we'll conclude the session actually. Practice. वर्ड्स में ओम शांति। सोल कॉन्शियसनेस में जब हम आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक बहुत सुंदर तरीका वो ये है कि हमारे अंदर में ये जो सोच है कि दिस वन इज़ राइट, दिस वन इज़ रॉन्ग, इसकी बजाय, क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं यू आर रॉन्ग, तो इस बात को एक्सेप्ट करना सामने वाले के लिए आसान नहीं होता है। तो हमें ये अधिकार नहीं है हम ये कहें कि आप गलत हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप और हमारा विचार अलग अलग है। यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत सरल हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सरल नहीं है कि हम स्ट्रेट अवे किसी को रॉन्ग कहें। तो ये चीज़ हमें पहला ध्यान पे रखनी है। तो जितना हमारी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज बनती जाएगी, हम कोशिश करेंगे कि हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, बिहेवियर, उससे किसी को दुख न मिले और हम में टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ ज़रूरी है। तो कई बार हमारे मुख से निकलता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती इसके साथ। इसका मतलब मेरे अंदर से ये मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज को नहीं दर्शाता है। ये दिखाता है कि मेरे अंदर से रिजेक्शन की एनर्जी है जो वहाँ तक पहुँच रही है कि वो व्यक्ति गलत है। लेकिन मुझे ये कहना है कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कैसे एक्सेप्ट करूँ। तो मैं अपने पर काम करूँगी, तो मुझे अपने आप पर काम करना है, ये एक दूसरा तरीका है। तो कभी भी हम, एक तो पहली बात, विविधता इस संसार की शोभा है, हर एक जैसा नहीं हो सकता, ये हमें ज्ञान सुनाता है। दूसरी बात, हम सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें और आगे बढ़ाएं, रिस्पेक्ट दें, एक्सेप्ट करें। और तीसरी बात ये है कि जब भी हम अपने आप में बैठते हैं तो हम सेल्फ पर फोकस करें, क्योंकि जैसे एक एक्टर है, वो दूसरा क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अगर वो उस पर फोकस करेगा तो उसका अपना रोल ख़राब हो जाएगा। तो आज हमारे अंदर सबसे बड़ी बात आ गई है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो इस तरह होना चाहिए। ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, ये कोई आत्मीयता को दर्शाती नहीं है। तो चाहे हमारा बच्चा हो, हमारा स्पाउस हो, हमारा कलीग हो, हमारा स्टाफ हो, सबके साथ हम रिस्पेक्ट से बात करें, प्यार से बात करें और किसे क्या नहीं करना चाहिए वो बात हम कम करें, पर मुझे क्या करना है उस पर फोकस ज़्यादा करें। तो जब मैं अपने आप पर फोकस करूँगी, मुझे मेरा रोल क्या है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी हो, मेरी स्क्रिप्ट क्या है, मैं अपने पर फोकस करके बेस्ट परफॉर्मेंस दूँगी। किसी के साथ ना तो कंपेयर करना है, ना कंपटीशन करना है, न कंप्लेंट करनी है, न क्रिटिसाइज़ करनी है, सबको अप्रिशिएट करना है, सबको एक्सेप्ट करना है। यही वास्तव में
सोल कॉन्शियस स्टेज है। तो जब हम इस कॉन्शियसनेस के साथ व्यवहार में आते हैं तो आप देखेंगे हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और केवल इतना नहीं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ इसका इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर में और मेरी आगे आने वाली जनरेशन पर क्या होगा, मैं इनको क्या संस्कार दे के जा रही हूँ, मैं कैसी संस्कृति और कैसा कल्चर बना रही हूँ। इस सोच के साथ हम सब कुछ करें तो जब हम करेंगे तो डेफिनेटली परमात्मा ने हमें एक महावाक्य कहा है कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। जैसा कर्म वो करेगा उसे देखकर मैं करूँगी नहीं, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो मुझे अपने कर्मों पर, अपने थॉट्स पर, अपने वर्ड्स पर, अपने बिहेवियर पर, अपने कैरेक्टर पर, अपने एटीट्यूड पे अटेंशन दे के मुझे रोल अदा करना है और सबको देख के खुश रहना है। जो भी जो कर रहे हैं अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मैं तो समझती हूँ कॉन्फ्लिक्ट कहीं कार्य क्षेत्र में नहीं आता, कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। जब हम इल फीलिंग्स भेजते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भेजते हैं तो ही ये, अगर हम इसको सस्टेन करना चाहते हैं इस आत्मीयता को, तो आत्मा के गुणों को अपने कर्म में लाएं। वो गुण हैं प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति। इन गुणों को कार्य व्यवहार में लाएं। यही प्रैक्टिस ही आध्यात्मिकता है। ओम शांति। Thank you very much, and it's a very wonderful conclusion. So खुद का attention दे दो so that you can take care of everything actually. So आपका सोच, आपका वर्ड्स, वाणी और आपका कर्म, इसमें अटेंशन देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे एक्चुअली. So with this, thank you very much for everyone to part of it and make us this team to contribute very well. Everyone has given their beautiful views and conclude thing. Let us give a big applause to the team. And so we'll conclude it in the remembrance of Supreme with just 2 minutes. So just 2 minutes of meditation practice, we'll try to conclude this session actually. Thank you. Acha. Can we do after the things because we are सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। So as a last item,